poets, translators, poetry lovers, and all of you who have joined from different parts of India, different parts of the world. Welcome to the first meeting of Kritya Poetry East and West. This online poetry meet, which is planned as a periodic poetry gathering, is being inaugurated today. This event is organized by Kritya Poetry, founded by Madam Kritya Saxena, a very well-known and well-established Hindi poet. Kritya Poetry East and West, the online poetry gathering, is the newest initiative. Poet, translator, and editor. Hatred all around us. Poetry is one of the channels among many other channels for us to listen to each other, for us to listen to ourselves, to our deepest aspects of our being, and to listen to others. I think poetry is a space which reminds us of our own humanity, reminds us of the abundant love that we have within us, that we are capable of, the care, the concern, and the affection that we can feel for everyone and everything that surrounds us, and only in relation to which we become complete. And poetry is a means of searching for and finding and seeking such completion. It is with this spirit that Poetry East and West, Kritya Poetry East and West, hopes to facilitate monthly, perhaps, or maybe even more periodically, a platform for poets and translators and poetry lovers to come together, to exchange poetry, to listen to poetry, to talk about poetry, maybe even, launch poetry books, and in this manner create greater connect and greater interaction among ourselves. Today, very fittingly on this Valentine's Day, we are launching Kritya Poetry East and West with 3 poets. We have one international poet, Radhoni Ajrodi from Tunisia, an Arabic poet, 2 poets from India, one from North India, from Uttar Pradesh, Balia, Shwetang Singh, who writes in Hindi, and one from South of India, Kerala, Shyam Sudhakar, who writes, a bilingual poet who writes in Malayalam and English. Thus, we will be listening to very fine poetry today by these poets. I am sure that there are many more poets who would be presenting their poems in the coming days, and hopefully we'll have more and more people joining us and listening to these poetry from all over the world. Before we move on, I would like to request Madam Kritya Saxena to say a few words about the journey of Kritya and about her vision of Kritya. Over to Madam Kritya Saxena. Thank you. Kamlakar Bhattji, you have given a very big introduction of my work, but I can introduce you with the Kritya. Most of us know about Kritya, but people who are very young may not be aware of Kritya's work. आप सबको पहली बार सबको नमस्कार.
कृत्या से, कृत्या के मंच से। आप सबको मालूम होगा कि कृत्या 2005 में ही हमने शुरू की थी और 2005 में हमारा उद्देश्य कविता को आगे बढ़ाना, वैश्विक दृष्टि में भारतीय कविता को या ईस्टर्न कविता को विश्व में ले जाना और वैश्विक कविता को उत्तर पूर्व में यानी हमारे भारत आदि देशों में लेकर आना है। और उस दृष्टि से ये कृत्या पत्रिका शुरू की थी और तभी हमने अपनी कृत्या फेस्टिवल भी शुरू किया था। वी हैव स्टार्टेड a poetry journal in 2005 to bring the ideas of Western world to Eastern world and from Eastern world to Western world. It was the monthly web journal. It was the first web journal of India for only poetry. It was bilingual. And it was also, we have started poetry festival also. And from 2007 itself, we had a very good festival. 2007 में हमारे पास विदेश से 22 पोएट आए थे और and this festival was also has a special character that it is a nomadic festival. Means every time we used to go to new place to introduce new language of our country. So it was like this कि पहले हमने केरल में किया, त्रिवेंद्रम में, फिर हम जम्मू एंड कश्मीर गए, फिर केरल आए, नहीं फिर हम जम्मू कश्मीर जाने के बाद में हम केरल आए और फिर हम केरल से पंजाब गए, पंजाब से हम मैसूर गए, मैसूर से हम फिर केरल में आए। तो इस तरह से it was keep on moving. Means it's a nomadic. We were going to new audience every time with many poets along with us, many international. Another special thing of the Kritya was कि हम कृत्या में पोइट्री, हमने जो पोइट्री थेरेपी का काम हमने कृत्या में शुरू कर दिया था। या हम लोग केवल एक मंच लगा के, शामियाना लगा के बैठते नहीं थे। हम लोगों का ऐसा उस समय तो खैर साहित्य के नाम से बहुत अधिक पैसा भी नहीं होता था, फिर भी हमारा उद्देश्य ये होता था कि हम जगह जगह जाए। मीन्स वी यूज्ड टू गो टू different places like schools, colleges, jail, even jail, hospitals, old age home, and orphans, and many places we used to go. Our aim was to bring the peace and therapical peace to the different people who really need poetry. 2020 and 21 mein, we had a biggest festival online, 10 days in 20 and 21st we had for 10 days festival in which more than 100 international poets and 100 Indian poets have taken part. After that, we used to do Kritya talks. Every week we used to talk to artists, scientists, dancers, musicians, everyone. After 21 onward, we have stopped it due to my illness. I could not continue, and now I feel that I should come back to poetry with the therapy because it will work a therapy for me and people like me. कमलाकर भट्ट जी ने बहुत बड़ा इंट्रोडक्शन दिया and I should give his introduction because कमलाकर भट्ट जी is a great poet, very fantastic poet, fantastic translator. He has translated, I think, any good poetry cannot leave his eyes. He translates so well. And after that, we have, he has translated my book also, so I'm thankful to him. But he is such a good organizer also. When I asked him to join this Kritya Poetry East and West, and he has taken all the initiative and he is helping us. Now he is the organizer, I may say. So I thank to Kamlakar ji and I request you to start the poetry session, please. Thank you.
Rati Saxenaji. We'll move on to the poets. Of course, it was heartening to listen to the journey of Kritya. In fact, you're right. I have always been following the events of Kritya and the magazine also. So it is indeed heartening to hear the journey of Kritya poetry uh, these many years, in the past 2 decades. Now, today, let us begin with today's poetry session. Then we have, as I said, three poets. On behalf of Team Kritya, I welcome all the three of them: Shyam Sudhakar, Shwetank Singh, and Radhoni Ajrodi. I first and foremost, let me apologize if I am mispronouncing anyone's name. I think getting the pronunciation of a poet's name is very important, but sometimes we are not well trained in all the languages. So I request all of you to bear with me. Now, the first poet to present his poetry would be Shyam Sudhakar. I will begin with a brief introduction of Shyam Sudhakar before I request Shyam to present his poetry. Shyam Sudhakar is the winner of the Srinivas Rai Parol Poetry Prize 2022, a very prestigious poetry prize. He is a bilingual poet who grew up in Palakkad district of Kerala, India, writing in both English and his native tongue Malayalam. Shyam has been widely published in a number of other languages, including Chinese, Hebrew, French, Italian, German, Hindi, Tamil, and Bengali. Erpam, Avastante Kollimin, which means the last meteor, and Kadalinte Kavalakkaran, keeper of the sea in Malayalam, drenched by the sun in English, slicing the moon, a bilingual video rendering, Shyam Sudhakar Kavitakkal, poems of Shyam Sudhakar in Tamil, and Samudrer Prahari in Bengali are his major poetry collections. Other works have been published both online and offline, and he has also edited and translated several works from English to Malayalam. His forthcoming books include Musiris, an English poetry collection, and Malu the Astronaut, a work of children's fiction. K. Sachidanandan notably points out the linguistic and thematic diversity contained in Shyam Sudhakar's poetry. His writing consistently engages with myths, legends, and fairy tales, often exploring spaces of magic realism that evoke a sense of imaginative discovery. He is the editor of the academic journal Conspectus, a journal of English studies. He is also one of the founder members of the Center for Performance Research and Cultural Studies in South Asia and the poetry advisor of Sydney School of Arts and Humanities. He has participated in numerous poetry readings both at home and abroad, including the 9th Athens World Poetry Festival in Greece and Brisbane Poetry Festival in Sydney, Australia, and was a writer in residence at the International Writers and Translators House, Ventspils, Latvia. Holding a PhD in English literature from University of Madras, Shyam is presently based in Kerala, researching and teaching English literature at St. Thomas College, Thrissur, Kerala. Mind you, I was introducing one person all this while. Shyam has so many hats to wear and so many accomplishments. Now we move on to Shyam's poetry. I request Shyam Sudhakar to begin presenting his poetry. I think he's going to read some poems in Malayalam and some in English, but we also have Brajesh Singh ji to present some of Shyam's poems into Hindi, and Brajesh Singh ji will be reading those in Hindi translations also. So we begin with Shyam Sudhakar. Oh, thank you, Kamalakar, and for that great introduction. And thank you, Dr. Vidhi Saxena, for inviting me and for this prestigious Kritya. I thought I will
start reading a suicide note. And today is, as we all know, it's Valentine's Day. So I thought I will read a love poem, and which is also a suicide note. And the title of the poem, the English title of this poem is Lady Spider's Suicide Note. And in Malayalam, I will read the Malayalam version, and then I think British Singh will read the Hindi version. The title is ഒരു പെൺചിലന്തിയുടെ ആത്മഹത്യാക്കുറിപ്പ്, which means Lady Spider's Suicide Note. ഇന്ന് രാവിലെ മാത്രമാണ് ഞാൻ കാര്യമറിയുന്നത്, നമ്മൾ ചിലന്തികൾക്ക് കുടുംബം വിധിച്ചിട്ടില്ലത്രേ. ഇന്ന് രാവിലെ മാത്രമാണ് ഞാൻ കാര്യമറിയുന്നത്, നമ്മൾ ചിലന്തികൾക്ക് കുടുംബം വിധിച്ചിട്ടില്ലത്രേ. ഒരു തവണ തമ്മിൽ ഇണചേർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെയും വരാൻ പോകുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളുടെയും പുഷ്ടിക്ക് വേണ്ടി നീ നിന്റെ കണ്ണും തൊലിയും ഒഴികെ മറ്റെല്ലാം ദ്രവരൂപത്തിലാക്കി എനിക്ക് കുടിക്കാൻ കഴിയും. സ്വന്തം ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി നീ തീർത്ത വലക്കണ്ണികൾ മാഞ്ഞു പോകുന്നതിന് മുൻപ് ഞാൻ നിന്നെ മുഴുവനായും എന്നിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. കരഞ്ഞും പിടഞ്ഞും ഞാൻ പുറംതള്ളുന്ന കുട്ടികൾ അവരുടെ 8 കാലുകൾ കൊണ്ട് അച്ഛനെ തെരയും. കൊച്ചു കൊച്ചു പല്ലുകൾ എന്റെ മാറിലിരുന്ന് നമ്മളെ ഊറ്റി വേർതിരിക്കും. ഞാൻ ഇതൊന്നും ആഗ്രഹിക്കാത്തത് കൊണ്ട് സ്വയം ഇല്ലാതാകുന്നു. എനിക്ക് വേണ്ടി നീ ഇനി എന്റെ മലയിൽ വസിക്കണം. എനിക്ക് വേണ്ടി നീ ഒരച്ഛനാകാതെ സൂക്ഷിക്കണം. It's about the spider's suicide note, where the spider realizes that it will die after mating, and that is how the life of spider is. Like after mating, it will die, and the female spider will die, and no, the male spider will die, and the kids will feed on the male spider, and then the female spider will eat the male spider, and the kids will feed on the female spider. Yeah. Rajesh, Okay, thank you. I am honored to read Hindi translation of poet श्याम सुधाकर जी. हिंदी टाइटल है मकड़ी का आत्महत्या नोट. आज सुबह ही मुझे इस बारे में पता चला कि हम मकड़ियों के परिवार नहीं होते. आज सुबह ही मुझे इस बारे में पता चला कि हम मकड़ियों के परिवार नहीं होते. सहवास के दौरान मात्र मेरी प्यास बुझाने के लिए अपने नेत्र और त्वचा छोड़कर तुम स्वयं को पीस लेते हो. हमारे बच्चों और मेरी स्वयं की सेहत के लिए तुम्हारे द्वारा भोजन के लिए बनाए गए जाल के मिटने से पहले ही मैं उन्हें बाहर निकाल दूंगी, धोते तड़पते अपने पिता को खोजते हुए. उनकी 8 टांगें टिकी होंगी मेरे सीने पर. उनके छोटे छोटे दांत हमें अलग कर रहे होंगे. क्योंकि मैं ऐसा नहीं चाहती तो मुझे यह करने दो. मेरे लिए तुम्हें जीना चाहिए, मेरे लिए तुम्हें पिता नहीं बनना चाहिए. Thank you. And now I'll read another love poem. It's titled as Cartography. And it is from my recently published chapbook, Cat in the City. Cartography. Behind the neck, where thoughts bloom, a birthmark maps an ocean. There, a kiss evaporates into the salty wind. 2 exiled bodies meet in the blue meridian. Though vary, their bodies and language mirror dance and poetry. Their forbidden love taste of salt, smells
of unstable thirst, echoes the depth of blue where compasses vanish. Their entwined fingers whisper like mountain to the wind. Secretly they smile. Together they cook. Their salty dreams caught in fish eyes. Like the sea opening into the desert, they quench each other, breathing heavily, entangled. A submarine volcano unwinding its heat into an ocean deep. Two exiled strangers meet in the expanse, their bodies marked by tears. And the next poem is, maybe it'll take a few more minutes, and it's a little big one titled Muziris, which is the title of my forthcoming book, Muziris. It has 5 sections, and this poem is basically about the history of Kerala. And as you all know, Muziris was a port, ancient port here in Kerala, where everything came from different parts of the world. So I think the entire Kerala is like, we should think about Muziris because it was such an important port before Cochin. Cochin is a small port, but Cochin was once a small port, and Muziris was a bigger port, and now it is no longer there. So that legacy, the poem is about that legacy. Yeah, Muziris. It has 5 parts. The first one. 1. The one who knows the sea unlocks a sky in the heart. 2. The old town of the rough rains that you seek is dead. The alleys that once glittered with the spark of metals now reek of silence. Everything turns to its origin. Earthen pots to mud, water to the depths unraveled by the anchor, coins to their leisure. Nothing remains in the memory. No more jasmine scents, no more damsels. Roads are clogged by thrones. Weapons, like photographs of lightning, became mere showpieces. 3. When the afternoon sun becomes rooted in the earth and the tree dozes off, stretching its fingers to Periyar is a river, Periyar, I remember a lost vessel that once sailed to my shore as natural as a mango falling to its own earth. With a kiss, God united us. Gazing at the night sky, we joined the stars. Together, we saw the edge of the sky boiling in the waves. At the doorstep of the sea, a town bloomed, stretching out 51 tongues. The glory of the sun has long drowned, yet the sound of the same sea and the faith in the same stars drip into memory. We parted ways in the drought after the flood, pretending nothing passed between us. Never committed love or time, shared dreams of body, nor surrendered language. Yet, had you waited for me this long on the same deck, like a season nailed into the wall of earth by some god, had you stood unmoving in the summer heat and salty winds echoing the same sea? Many have come later in search of me, animals, birds, fishes, a defeated king, corpses of toys that lost their child, long kisses of wind blown into the darkness, angered stars waiting for their turn, the rain.
Like lightning on the earth, time has shimmered through my bones, unknown my day and night. Water mountains blooming wild, shivering soil, the madness coursing through the flooded arteries of Periyar. I still jolt awake at those memories. 4. Did you confuse the mouth of the broken pot with bangles? Did you decipher the scribbling of the mad foreigner to be a new language? Dear Mr. Historian, if you are done seducing the tourist, please be seated too and listen to this song. As the king for the foreign deity decreed to build a temple mighty, with the same sweet and spirit that we set straight in merit, blowing sand, lifting stone and timber in mass, building walls, fitting solid doors in brass. The royal caste in a grand manner stood adored under greed's banner. The lower caste soon stepped far aside, cowering at the eternal Dharma beside. Those spaces vacated by the untouchables, then claimed by the insatiable feudal men, parting the grating sea with roaring oars under the wrath that the summer sun pours. In the ragging winds on the wooden vessel, the goddess sways in tune with the waves' whistle. Wearing the sacred sword and chillam chimming, the devotees utter the fucking song dancing. The procession goes on with the mother god blessing. She sings down the navel of the land cursing. As an offering, once a Portuguese sailor sent a bell for the goddesses in valor. Its resounding knell came the music of the world. And on it is written the praise of its Lord, Sia Asantimo Nome de Levado. It's in Portuguese. There is a bell found in Kodungalur temple, and it is written in that bell to Christ our Lord. Before the gods were not angry with each other. And I would like to read this song in Malayalam as well, if you permit me, just to listen to the sound of the language. Can I? I'll just read the song part. I'm not going to read the entire part. This poem is not yet over, but I thought I'll mix both the languages. Yeah, so good. പരദേശമൂർത്തിക്കൊരാലയം കെട്ടുവാൻ പാർത്ഥിവൻ കൽപ്പന ചെയ്തവാറെ പല ചോരയാലും വിയർപ്പിനാലും പതിവായി നാം പണിയുന്ന പോലെ മൺകീറി കല്ലും മരവുമേറ്റി മതിൽ കെട്ടി വാതിലിൽ ചെമ്പുകെട്ടി പരവേൽക്കുവാനായുടുത്തുകെട്ടി അരശാങ്കമാർത്തികൾ കൂറകെട്ടി അടിയാളർ തീണ്ടാതകന്നുമാറി അവർ തീർത്ഥപാത കവർന്നു ലോകർ ദൂരമളക്കും തുഴകളൊപ്പം താപം വിതയ്ക്കും വെയിലിനൊപ്പം കലികൊണ്ട കാറ്റിൽ മരക്കലത്തിൽ താളത്തിലാടി വരുന്നു ദേവി പുലയാട്ടുതുള്ളി പ്രജകളൊപ്പം വാളും ചിലമ്പൂം അണിഞ്ഞുറഞ്ഞ് നാടാകെ ചുറ്റി നടന്നു ദേവി മണ്ണിന്റെ പൊക്കിഴായി താഴ്ന്നു ദേവി മക്കൾക്കൊരമ്മയായി തീർന്നു ദേവി ദേവിക്കു കാഴ്ചയായി അന്നൊരിക്കൽ പണിതയ ചുറ്റമാർന്നൊരു പറങ്കി ചേരുള്ള കൂറ്റൻ മണിയുലകിൻ നാദമായി നാട്ടാർ തിരിച്ചറിഞ്ഞു യേശുവെ കീർത്തിച്ചു കൊണ്ടതിന്മേൽ സെയ്യ ഒസാന്തിമോ നൊമേ ദേ ലെവാദോ യെസൂസ് ദെ ലെവാദോ ചേലോടെ കുത്തിക്കുറിച്ചതത്രേ ആ മണി ആർ കണ്ടറിഞ്ഞു സത്യം. Why did you wipe off from the memory the stories of Persian merchants who waited on the shore for goods and spices? The farmer who was forced to sell his black tears for almost nothing.
his skinny, barren daughters who could never climb up high or flower. Once a lean sailor came in from the sea. His dreams blazed in vertebra of the sun, the brain of the sky. He left no footprints. Plowing the soil, he sowed his seeds, and from there grew tombs like moss on the earth. Hollow hearts bloomed. The waterfall between two dreams dammed itself. The wings of the wild duck drooped. Crows became the dead. The wild smile of a heart appeared in the midst day, the shivering skeleton of the sun. Several arcs came later, hunting wild stars. Many sailor, different seeds. I can hear the footsteps of those without footprints, thud, 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 spreading down like lightning from the heart. Dreams, fears, reflections, excitements leave no footprints. When your palm leaves narrate history as stories of mere conquest, the sigh of a rotting harbor reflects a lightning smile in the dark. Buried in the earth lie several scriptures, Paditya songs, various news from Greece, Arabia, Persia, a Buddha's head wrapped in Chinese net, the chim of death in precious stones, cotton, food, weapons, Isis, Patini, Kannagi, the women who still guard the corpse of their husband in lonely temple tunnels, the wives who turned to stone when the fire feasted upon the city. The steam of the vengeance rising from the ruins. A big drop of wrath covers the sky. The world ends with water and fire. Whose world has ended otherwise? Birth and death, Alpha and Omega. Yet, a turtle with ashes in one eye and water in the other upholds our dreams. It's let hold the bareness of centuries, the weird waters it has been through, and fallen faces innumerable. Pallivana Perumal, the crucified brought by Hippolytus through the waters, Shankara, the eternal, Arya Shankara, rural deities who turned to sand and stone, Naga queens, languages festered with smallpox, the barge that washed ashore, a refugee Jew, the farmer of black tears, the smile of death that escaped from the salty lips of drought, the thud, 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 thud sound of the last beat that dissolves in wind without footprints. 5. This is the last stanza. 5. Like the song of death spreading in the burning cabin of a ship, the presence of sea unfurls in memory. Its voice crowds into me like the roots of a wild tree creeping into a dead man's ear, like meeting one's own future in a desert. I burn in the rhythm of that song. In the fall of my life, time and wind tell me of Bilati ships landing in Kochali. Kochali is the ancient name of Kochi. Time and wind tell me Bilati ships landing in Kochali, crossing the invisible web of machines. The sea lashes hard against my heart, now covered in moss. The decayed roots of a giant tree that had once welcomed thousands of migratory wings lie spread on the soil. I can hear my name slipping into silence, my name like a huge turtle crawling into oblivion. In time, the wind has managed to
slowly heal the old wounds. I leave myself open to new lashes. The fallen doors will open only to the sky. The fallen doors will open only to the sky. Their focus only on the sun and the moon. I can hear the wind brushing past the waves, assertions and desertions. Thank you. And now I would like to read an early poem of mine. I'll read it in Malayalam. I think this is the second poem that I wrote, and this is the first poem that I published. So this is, I mean, somewhat close to my heart. The title is Dew, not the dew drops. It's about the stamp due in post office, in Indian post office. Dew. ഗാന്ധിയുടെ പ്രതിമ യേശുവിന്റെ പ്രതിമയ്ക്ക് 3 രൂപയുടെ പോസ്റ്റ് കവറിൽ എഴുതി. ചെയ്ത പാപങ്ങളെല്ലാം കുരിശു ചുമന്നപ്പോൾ മാറിയെങ്കിൽ 2 കള്ളന്മാർക്കിടയിൽ വെയിലുകൊണ്ട് സ്വയം വാട്ടാതെ ദേവാലയങ്ങൾ വിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് പോരും. എന്റെ ജനത അങ്ങയെ സംരക്ഷിച്ചുകൊള്ളും. മറുപടിയായി യേശു കുറിച്ചത് ഇങ്ങനെ: താപശമനിയായ തല കാരണം വെയിൽ അങ്ങേക്ക് പ്രശ്നമല്ല. കയ്യിൽ വടിയുള്ളത് കാരണം കലാപകാരികൾ അങ്ങയെ ആക്രമിക്കുകയില്ല. താങ്കൾ സ്വയം പര്യാപ്തനാണ്. ഞാൻ നിരായുധനാണ്. പുറത്തിറങ്ങിയാൽ താങ്കളുടെ ജനത എന്നെ ഹിംസിക്കും. കത്തുകളിൽ നിന്ന് സ്റ്റാമ്പ് വിഴുങ്ങിയ പോസ്റ്റ്മാൻ 2 വ്യത്യസ്ത നൂറ്റാണ്ടുകളിലെ പ്രബലർക്കുമീതെ ഡ്യൂ അടിക്കാൻ മറന്നില്ല. I think Brajesh will read Hindi version. Yes. Amazing poetry, Shyam. Excellent. Thank you. शीर्षक है दातव्य। गांधी जी की मूर्ति ने यीशु की प्रतिमा को 5 रुपए लगा एक लिफाफा प्रेषित किया। यदि तुमने क्रूस उठाकर अपने सभी पापों का प्रायश्चित कर लिया है तो 2 चोरों के बीच धूप में मत बुझाओ, चर्च छोड़ो और यहाँ आ जाओ, मेरे लोग तुम्हारी रक्षा करेंगे। यीशु ने उत्तर दिया, धूप तुम्हारे लिए कोई समस्या नहीं है क्योंकि तुम्हारा दिमाग शांत है। दंगाई तुम पर हमला नहीं करेंगे क्योंकि तुम्हारे पास लाठी है। तुम सुरक्षित हो, मैं निहत्था हूं। अगर मैं बाहर आया तो तुम्हारे लोग मुझ पर हमला करेंगे। पोस्टमैन जिसने पत्रों से टिकटें चुराई, डाक टिकट अपर्याप्त है की मोहर लगा दी और 2 युगों के बीच के पत्राचार पर मोहर लगा दी। धन्यवाद। Thank you, Brajesh. Yeah. I think we have to change, because when you said that the meaning is the stamp, so it is the title of the poem should be मोहर। ब्रजेश जी इसको ठीक कर लीजिएगा। कविता का शीर्षक है मोहर। ठीक है। Yeah, and but though I am not a great scholar like Dr. Kritya Saxena in Hindi, I heard the sound and I really loved it because I mean he translated it in a very colloquial way, and that is exactly the crux of the poem. Thank you, Brajesh ji. Yeah. So I'll read one poem in English, and am I running out of time or do we have? कमलाकर जी, टाइम ठीक है क्या? कमलाकर जी, आपका माइक बंद है, आप उनको बता दीजिए कितना और उनको पढ़ना। I think Shyam can read one more poem in English and then we move on to Shwetank.
Okay, then maybe I will read one Malayalam poem, and because he has translated one another Hindi one. Cat in the City. Cat in the City, yes. Maybe I'll read Malayalam and English, and then he can read the Hindi, and then we Yes, can yes. Yeah. So first, maybe I'll read it in English, and then you can hear the Malayalam sound. Cat in the City. How long will it take for a cat to grow inside the city of my mind? It's the city of my mind. How long will it take for a cat to grow inside the city of my mind? No matter where the cat hides herself, she is always visible. In the city, horns blaze in her ears. Death clogs her nostrils. She gets the same food every day. She hears same slogans, the same anxieties about equality. She sees repeating templates of resistance, tired waterfalls during the leisure time, boats, and popcorn. As she crosses a road towards a zoo, a zebra stretches its hoof, waves its tail. When a car reverses nearby, she hears a squirrel squeaking repeatedly. A tanker lorry bellows in a distance. In the dark, a wild horse bumps into her. The squeal of the horseshoe. Somewhere, a roar collides with the night. The cat in the city of my mind grows bigger and bigger, its tail longer and longer, teeth and nails glittering sharper and sharper, tongue tasting every bit of flesh and bone, her form raising a head along every road, conquering every roof, as a chill presence in the blistering heat, a warm touch in the biting cold, like unheard footsteps, a trampling whisker, a visitor only in the dreams of a language unknown, effortlessly changing forms through the shadows and terrifying my entire city. 2 pointed ears of an unborn feline haunt me these days. Nibbling at my pain, she grows rapidly day by day, stretching her claws over the walls of my heart. 8 nails sink in. I'll read the Malayalam version. പട്ടണത്തിൽ പൂച്ച, cat in the city. This is from my recently published book, കടലിന്റെ കാവൽക്കാരൻ. ഒരു പൂച്ച ഉള്ളിലിരുന്ന് വളർന്നു വലുതാകാൻ എത്ര നാളെടുക്കും? ഒരു പൂച്ച ഉള്ളിലിരുന്ന് വളർന്നു വലുതാകാൻ എത്ര നാളെടുക്കും? ഉള്ളിലെ പട്ടണത്തിൽ ഏതില്ലം കടത്തിയാലും ഒരേപോലെ, കാണുന്നത് ഒരേ ഹോണടി, കേൾക്കുന്നത് ഒരേ പൊടിമണം, ഒരേ ഭക്ഷണത്തിന്റെ രുചി, ഒരേ മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ, സമത്വത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ആശങ്കകൾ, ഒരേ പ്രതിരോധത്തിന്റെ അച്ചുകൾ, വേളകളിലെ പതിവ് വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങൾ, ബോട്ടുകൾ, പോപ്കോൺ. ഉള്ളിലെ റോഡിന് കുറുകെ കടക്കുമ്പോൾ ഒരു സീബ്ര കുളമ്പു നീട്ടുന്നു, വാലാട്ടുന്നു. റിവേഴ്സ് വരുമ്പോൾ ഒരണ്ണാൻ ചിലയ്ക്കുന്നു, ഒരു ടാങ്കർ ലോറി മുക്രയിടുന്നു. ഇരുട്ടിൽ ഒരു കുതിര സഡൻ ബ്രേക്കായി വന്ന് മുന്നിൽ വീഴുന്നു. ഒരു ഗർജനം രാത്രിയിൽ എവിടെയോ ഇടിച്ചു നിൽക്കുന്നു. പൂച്ച വളർന്നു വളർന്ന്, വാൽ നീണ്ടു നീണ്ട്, നഖങ്ങളും പല്ലുകളും രാവി രാവി, എല്ലും ഉള്ളും രുചിച്ച്, ഉള്ളിലെ റോഡിലെ എല്ലാ വേഗതകളും വെട്ടിച്ച്, എല്ലാ മേൽക്കൂരയും കീഴടക്കി, ചൂടിൽ തണുപ്പായി, തണുപ്പിൽ ആവിയായി,
ആരും കേൾക്കാത്ത കാലടിയായി, വിറയ്ക്കുന്ന മേൽമീശയായി, മറ്റേതോ ഭാഷയിലുള്ള സ്വപ്നത്തിൽ മാത്രം വന്ന് ഉള്ളിൽ നിഴലുകളിലൂടെ ഒടിമറഞ്ഞ് ഉള്ളിലുള്ള പട്ടണത്തെ മുഴുവൻ ഭയപ്പെടുത്തുന്നു. പൂച്ച വളർന്നു വളർന്ന് വാൽ നീണ്ടു നീണ്ട് നഖങ്ങളും പല്ലുകളും രാവി രാവി എല്ലും മുള്ളും രുചിച്ച് ഉള്ളിലെ റോഡിലെ എല്ലാ വേഗതകളും വെട്ടിച്ച് എല്ലാ മേൽക്കൂരയും കീഴടക്കി ചൂടിൽ തണുപ്പായി, തണുപ്പിൽ ആവിയായി, ആരും കേൾക്കാത്ത കാലടിയായി, വിറയ്ക്കുന്ന മേൽമീശയായി, മറ്റേതോ ഭാഷയിലുള്ള സ്വപ്നത്തിൽ മാത്രം വന്ന് നിഴലുകളിലൂടെ ഒടിമറഞ്ഞ് ഉള്ളിലുള്ള പട്ടണത്തെ മുഴുവൻ ഭയപ്പെടുത്തുന്നു. ഇതുവരെ ജനിച്ചിട്ടില്ലാത്ത 2 ചെവികൾ എന്റെ പകലുകളെ വേട്ടയാടുന്നു. എന്റെ വേദനകളിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് തന്നെ വലുതാകുന്നു. ഉള്ളിൽ നഖമാഴ്ത്തി കോറി വിനിക്കുന്നു. താങ്ക് യു. ബ്രിജേഷ് ജി. Okay. Again, I say that I am honored to read a thoughtful and beautiful poem of respected poet श्याम सुधाकर जी. शीर्षक है हिंदी में नगर में बिल्ली. आखिर कितना समय लगेगा, आखिर कितना समय लगेगा मेरे मन के नगर की बिल्ली को बड़ा होने में. भले ही बिल्ली स्वयं को कहीं छिपा ले, वो हमेशा नजर आती है नगर में. हॉर्न उसके कानों में बजते हैं, धूल उसके नथनों में जम जाती है. उसे हर रोज फिर वही खाना मिलता है, वह सुनती है वही पुराने नारे, समानता को लेकर वही पुरानी बातें. वह देखती है प्रतिरोध के वही टेम्पलेट, थकित झरने, नावें और पॉपकॉर्न फुर्सत के पलों में. ज्यों ही वो चिड़ियाघर की ओर सड़क पार करती है, एक जेब्रा अपने खुर खींचता है, अपनी पूंछ हिलाता है. जब नजदीक ही एक कार उलटती है, उसे बार बार सुनाई देती है गिलहरी की चिचियाहट. दूर एक टैंकर लॉरी चिंगाड़ती है, अंधकार में एक जंगली घोड़ा उससे टकराता है. अश्रु नालों की तीखी टापें, कहीं कोई दाढ़ रात से उलझ गई है. मेरे मन के नगर की बिल्ली बड़ी और बड़ी होती जा रही है. उसकी पूंछ लंबी और लंबी होती जा रही है. चमकते दंत नख और नुकीले हो रहे हैं. जिह्वा मांस और हड्डी के हर टुकड़े का स्वाद ले रही है. उसका वजूद हर मार्ग पर सरपट दौड़ रहा है, हर छत पर कब्जा कर रहा है. झुलसाती गर्मी में वो शीत जैसी, खिटखिटाती ठंड में गर्माहट भरे एहसास सी, अनसुने पदचाप सी फरफराती हैं उसकी मूछें. अनजानी भाषा के सपनों की मुसाफिर, परछाइयों में से सहज रूपांतरित हो मेरे पूरे शहर को खौफजदा करती है. अजन्मी विडाल वंशनी के 2 नुकीले कान, इन दोनों मुझे डराते हैं, मेरी पीड़ा को नोच रहे हैं. वो दिन ब दिन तेजी से बढ़ रही है, मेरे हृदय की दीवारों को अपने पंजों से खरोंच रही है. मेरे भीतर धस जाते हैं उसके 8 नाखून. धन्यवाद. Thank you so much. Thank you, Brajesh ji, for so beautifully rendering Shyam's powerful poems into Hindi and reading them so well. And thank you, Shyam. Such powerful poems that you read today demands rereading. I would definitely go back to these poems again and sit with them alone and read them once again. Thank you so much for launching Kritya Poetry East and West, with such lovely poems. Now we move on to the next poet. We have made a slight change in the sequence. I was supposed to request Shwetank to read his Hindi poems, but
we are going to ask Shwetank to read after our Tunisian poet, Radoni Ajrodi. Radoni Ajrodi is a Tunisian poet and a stenographer. He has 2 books published in Tunisia and Egypt. He also has several critical writings, and many of his writings have been published in Arabic and international magazines. He has also participated in several poetry festivals around the world. We will be reading 3 of Ajrodi's poems. First, I will read them in English, followed by Ajrodi's Arabic rendering of the same poems. These are all translated into English by Emna Ajrodi. We thank Emna Ajrodi for her translations. Radhoni ji, I heartily welcome you to Kritya Poetry East and West. We are happy to have you on board today, and especially because you joined us at a rather late moment. And thank you so much. I hope you keep coming back to Poetry East and West. Rajodi's poetry, the 3 poems that I have read, are very, very powerful, and you will discover it yourself. The first poem is Luck Curse. We are lucky we were not there. We don't have tear ducts that can catch this magnificent flow of tears and horrors. It is natural that people under war are born with wider eyes for joy, suffocation, and weeping, with thicker vocal cords that can bear stronger sound vibrations, and that their outcries can come from under wreckage. That's why the aggressor always starts by burying tears reservoirs, attacks the vocal cords with incendiary ammunition, and fires its bullets towards mothers' chests and fathers' foreheads. We are lucky we were not there. Born in a UN hospital, growing up in a temporary refugees camp, in a UN tent, fed with powder milk distributed by the UN, receiving education in a UN school, that then puts your name on the UN joblessness list until they announce your death on TV. You die alone with things of UN on you. We were not there. We have been here, hardly survived genetic disorders, an infection, and a dog bite. We are also not comfortable about displaying our pictures half naked in world museums, and dresses embroidered with the flag and name of a country strutting in a party, where the sound of popping a champagne bottle is like firing a bullet. We also don't want them in our place out of mercy towards them. Just seeing politicians mentioning our suffering in their hustings is enough to label us as war hostages. They only have one last request: a moment of silence for each casualty, as we would like to hear the names of the coming deads recited in the skies. What a powerful poem. Thank you, Ajrudiji. Now, Razoni Ajrudiji will read this poem in Arabic. Hello, everybody. Hello, all my friends. I'm very happy to be with you in this meeting. I will thank Rati Saxena for the invitation, for accepting me to join you in this meeting. My name is Radwan Ajrudi. Radwan Ajrudi. My first poem is about the war in Ukraine, in Gaza, and around the world. ضريبة الحظ. محظوظون
أننا لسنا هناك. نحن لا نملك قنوات تتحمل هذا السيل الدافق من الفجائع والدموع. من الطبيعي أن يخلق أهل الحرب بعيون أوسع للفرح والاختناق والبكاء، بحبال صوتية أمتن تتحمل ترددات صوت أقوى حتى تخرج ذبذبات صرخاتهم من تحت الركام. لذلك أول ما يفعله العدو دائما أنه يطمر خزانات الدمع، يهاجم بالغازات الحارقة الحبال الصوتية، ويرسل رصاصه نحو أفئدة الأمهات وجباه الآباء. محظوظون أننا لسنا هناك. تولد في مستشفى تابع للأمم المتحدة، تكبر في مخيم مؤقت للاجئين تابع للأمم المتحدة، داخل خيمة للأمم المتحدة، يطعمونك حليبا مجففا توزعه الأمم المتحدة، تتلقى تعليمك في مدرسة للأمم المتحدة التي تضع اسمك بعد سنوات على قائمة العاطلين التابعين للأمم المتحدة. تظل أمميا داخلها حتى يمرر خبر موتك في التلفاز، فتموت وحدك وعليك آثار أمم متحدة. لم نكن هناك، نحن بالكاد هنا. نجونا من أمراض وراثية وعضة كلب وعدوى، فلا وقت لدينا لتصفح دفتر اختيارات الموت، كما أننا لا نستريح لعرض صورنا شبه عراة في متاحف العالم، وفساتين عليها علم بلادنا تتبختر في حفل حيث صوت فرقعة الشامبانيا يعوض صوت الرصاص. نحن أيضا لا نريدهم مكاننا رأفة بهم، فقد رؤية السياسيين يذكرون معاناتنا في حملاتهم الانتخابية كفيل بتصنيفنا كأسرى حرب. هم فقط لديهم طلب أخير: مقابل كل قتيل اصمتوا دقيقة، نريد سماع أسماء القتلى القادمين تتلى في السماوات. Thank you, Radwan. Azrudi, I hope I'm getting your name right now. Thank you for that very, very powerful poem. Now, I will move on to reading our Tunisian poet's second poem, which is equally striking. It is titled Guiltlessness. Guiltlessness. Wanted for a false charge, dead or alive, I have taken this world seriously. I illustrated that an algorithm with two unknowns cannot account for the tangle of two goats' horns, and that those who fall dead in wars and the falling apple are completely unrelated, neutral. Neither my parting beloved will come back with historical movements, philosophies, nor will her shadow make a hole through the wall if it passes at light speed. Honorable sky, this person standing before you now has been entangled in an old game. Which is stiffer, a stone that does not make circles in a stagnant pool, or a sound that you release and makes no echo? I asked no one to come to this world. I am guiltless, and my charge is fraught. I have just kindled the fire of war, so all the forest's butterflies sought refuge in. Thank you. Over to you, Azrudi. براءة. مطلوب من أجل تهمة زائفة، حيا أو ميتا، أخذ العالم على محمل الجد،
فسرت كيف أن خوارزمية ذات مجهولين لا تفسر تشابك قرني وعلين، وأن قتل الحروب الذين سقطوا لا دخل لهم بالتفاحة يا نيوتن. لا حبيبتي التي رحلت ستعود مع فلسفة حركة التاريخ، لا ظلها سيفتح ثقبا في جدار إذا مر بسرعة الضوء. سيدتي السماء، الذي أمامك الآن كان غارقا في لعبة قديمة، أيهما أشد صلابة؟ حجر لا يحدث دوائر في بركة راكدة، أو صوت تلقيه ولا تسمع صداه. لم أنصح أحدا بالمجيء إلى هذا العالم، بريء وتهمتي زائفة. أشعلت نارا للحرب فاستجارت بي كل فراشات الغابة. Thank you. Thank you very much. Now I will read Radwan Azrudi's third poem. It is titled Running with a Wooden Leg. Let me remind all of you that all the three poems have been translated by Emna Azrudi. Running with a Wooden Leg. Resigned from the future and from today, exhaling yesterday in his car's fumes, adorned with identity emerging from underneath my nails, with the music from the voice of dogs licking stagnant water. In life, I have been received by epidemics more keen on my survival than medicine. I have put my head on the lap of a blind tailor before I know that it is the hell I have been running away from. I have been out of everything, of the smell of burning gunpowder in the dress of a little girl thrown in the river, of the saliva of an executed man whose truth and shadow have been set up on the wall at once, of all the charges from murder to malaria, passing by a dove that has rotten before it bloats like the robe of Al-Halaj. I rush now towards day after tomorrow as described by those who have been betrayed with curses slamming my horizontal crossbar. Over to you, Azrul. Thank you very much for this beautiful reading. I wanna thank my sister Amna Ajrudi, who translate these poems. She is an English teacher in Tunisia. الركض برجل خشبية، مستقيل من الغد، من اليوم ينفث الأمس في دخان سيارته، متشحا بالهوية تخرج من تحت الأظافر، بالموسيقى من صوت لعق الكلاب للماء الراكد. تلقفتني في الحياة أوبئة حريصة على سلامتي أكثر من العقاقير. على ركبة خياط أعمى وضعت رأسي قبل أن أدرك أنه الفرن الذي كنت أهرب منه. خرجت من كل شيء، من رائحة البارود المحترق في ثوب صبية ألقيت في النهر، من لعاب مشنوق نصبت حقيقته وظله في وقت واحد على الجدار، من التهم واحدة واحدة، من القتل إلى الملاريا، مرورا بعجينة فسدت قبل انتفاخها كجبة الحلاج. أهرول الآن نحو ما أعرف من وصف المغدورين لما بعد الغد، واللعنات ترتطم بالعارضة الأفقية لمرماي. شكرا. Thank you very much. Thank you. Excellent, Radwan Azrudi. I am very happy you were able to join us and you have presented some wonderfully powerful poems that speak to our contemporary situation and so much
concern and anxiety they display. Thank you very much for your powerful poems. On behalf of Team Kritya Poetry, I thank you and your sister M. Nazru. Hope to have you again on this platform. Now, friends, we move on to Shwetank Kumar Singh from Balia in Uttar Pradesh, who writes in Hindi. Shwetank comes from the same place that has given us the fantastic Hindi poet Kedarnath Singh. Shwetank is a very young contemporary poet, deeply sensitive to the lives of women, farmers, laborers, and village communities, a poet of resistance. Many of his works have been published in various prestigious journals and magazines in India and abroad. His poems have been translated into Kannada, English, Gujarati, Odia, Nepali, Bhojpuri, and other languages. He has received several honors already: Hindi Savi Samman, Mishra Samman, Ma Vinapani Samman, Vageshwari Sahitya Samman, Neeraj Shabd Shilpi Samman, Abhijana Samman, Sumitranandan Pant Smriti Samman, Srijan Sadak Samman, Shikshak Ratna, Kamalakar Mishra Smriti Samman, among others. He has given poetry readings at many prestigious literary forums across the country. His poems have been recited by several renowned artists and actors. I must here say that Shwetank is a very, very powerful poet. I have translated some of his poems into my own language, Kannada, and into English, and I have discovered them unfailingly. His poems, have a deep impact on the readers. So I will now invite Shwetank to read his poems. The first 3 or so poems that he will read in Hindi, I will read their English translations. To begin with, Shwetank will read in Hindi and then I will read their English translation. So now I invite Shwetank. Over to you. सभी को प्रणाम, सर को प्रणाम, मैम को और सारे लोग जो सारे साथी जुड़े हुए हैं उनको प्रणाम करता हूं। और जैसे कि लिस्ट हमारे पास है उसी सर ने जैसा कहा उसी क्रम में कविताओं को रखने का आदेश चाहता हूं। पहली कविता है पतझड़, छोटी कविता है। सर ने इसका ट्रांसलेशन भी किया था बहुत पहले। पढ़ता हूं। पतझड़। रोज कुछ पत्ते झड़े हैं, रोज थोड़ा पतझड़ छाया है। ऐसा नहीं कि ये पतझड़ अचानक ही आया है, ऐसा नहीं कि पतझड़ अचानक ही आया है। Autumn. Autumn. Every day a few leaves are shed. There are brief spells of fall. It is not as if autumn is suddenly upon us. थैंक यू, थैंक यू। दूसरी, सूर्य और लालटेन। उसकी दुनिया का सूर्य घर के कोने में टंगी काली पुती लालटेन थी, जिसे वो सूरज से अधिक प्यार करती थी। जिसकी लौ में उसने लिखना सीखा था आजादी के कुछ अक्षर, जिसकी लौ में उसने लिखना सीखा था आजादी के कुछ अक्षर, अ, ज, द इत्यादि। बनाना सीखा था फड़फड़ाते पंखों के चित्र, बोलना सीखा था असहमति के कुछ जरूरी स्वर। जिसकी कालिख देखकर उसने ये जाना था कि काले दाग भी उजले होते हैं,
कि काले दाग भी उजले होते हैं। थैंक यू। Love the poem. Thank you. Let me read this wonderful poem in English now. It is titled The Sun and the Lantern. The sun of her world was the soot stained lantern hanging in the corner of the house. A lantern she loved more than the sun itself. In its flame, she learned to write a few letters of freedom. A, Z, A, D, I. She learned to draw pictures of fluttering wings. She learned to speak a few necessary notes of dissent. Seeing its suit, she came to know that even black stains can be luminous. वाह, धन्यवाद सर, बहुत अच्छा अनुवाद। तीसरी कविता, स्त्रियां जो ब्याह के बाद कहीं नहीं गईं। ब्याह मतलब शादी, मैरिज। बहुत सी औरतों को मैंने देखा और पर्सनली मिला। बहुत ज्यादा संख्या तो नहीं है सर, बट गांव में एक छोटी इसी कम्युनिटी जरूर है, जिससे कुछ लोग मिले जो कहीं गए ही नहीं थे अपने 50-60 साल के उम्र तक। उसी को देख के कविता दिमाग में आई, स्त्रियां जो ब्याह के बाद कहीं नहीं गईं। ऐसी बहुत सी स्त्रियां थीं जो ब्याह के बाद घर के बाहर नहीं गईं, कहीं भी नहीं। शहर, ट्रेन, पुल, बाजार, स्कूल, स्टेशन और अस्पताल उनके लिए कानों से सुने जाने वाले शब्द मात्र थे। ये आंखों से देखी जाने वाली कोई वस्तुएं नहीं थी उनके लिए। दो एक आदमियों को छोड़ दें तो उनके लिए आदमी गर्दन तक घूंघट काढ़ने वाले लाल सिग्नल की तरह थे। दो एक आदमियों को छोड़ दें तो उनके लिए आदमी गर्दन तक घूंघट काढ़ने वाले लाल सिग्नल की तरह थे। उनकी दुनिया की गोलाई मुश्किल से काले तवे जितनी थी। उनकी भूख सबको खिलाते ही समाप्त हो जाती। उनकी आंखों से कभी आंसू नहीं निकलते, बल्कि चूल्हे की लुत्ती जैसे अंगारे निकलते। इन स्त्रियों को घर को चलाने और बचाने के लिए ईंटों के बीच दबाकर धुएं के रंग का सीमेंट बना दिया गया था। इन स्त्रियों को घर को चलाने और बचाने के लिए ईंटों के बीच दबाकर घर धुएं के रंग का सीमेंट बना दिया गया था। आश्चर्य था कि उनके लिए घर उनका पूरा ब्रह्मांड था। घर की दुष्ट आत्माएं उनके लिए महामानव। वे कहीं जाना या कहीं पहुंचना नहीं चाहती थीं। दीवारों के पार कुछ भी देखना नहीं चाहती थी। उनके दुख उनके सुख बन गए थे। पता नहीं समाज के पास ऐसी कौन सी जड़ी थी जिसे सुंघाकर उन्हें रसोई, आंगन, दर खोला में दौड़ा दौड़ा कर घर का काम ढाहने वाली एक छड़ी बना दिया गया था। थैंक यू। Lovely, lovely poem. थैंक यू सर। Women who never went anywhere after marriage. There were many women who, after marriage, never stepped outside the house, nowhere at all. City, train, bridge, market, school, station, hospital. For them, these were words merely heard, not things ever seen by the eyes. Except for one or two men, man to them was like a red signal before which they drew the veil down to their necks. The circumference of their world was scarcely as wide as a black pan.
Their hunger ended once everyone else had eaten. From their eyes, tears never flowed. Instead, sparks flew like embers from the hearth. To keep the house running, to save it, they were pressed between bricks and turned into smoke colored cement. Strange. For them, the house was the entire universe. The evil spirits of the house were their superhumans. They did not wish to go anywhere or arrive anywhere, did not wish to see beyond the walls. Their sorrows had become their joys. Who knows what herb society possessed, what scent it made them inhale, that set them running through kitchen, courtyard, threshold until they were turned into a stick that submitted to the housework. वाह, बहुत अच्छा सर, मेरे से बेहतर आपने सर पढ़ दिया, लिख दिया। चौथी कविता है सर, उन्हें डर है। उन्हें डर है तुम्हारी सीधाई और सादगी से। उन्हें डर है क्योंकि तुम जानना नहीं चाहते कि वे बड़े लोग कौन हैं। उन्हें डर है बिना आगे पीछे किए तुम्हारे बेखौफ अकेले चलने से। उन्हें डर है तुम्हारे आत्मसम्मानी और स्वावलंबी होने से। उन्हें डर है कि तुम उनसे अपना परिचय नहीं चाहते। उन्हें डर है तुम्हारे अक्खड़पन और जिजीविषा से। उन्हें डर है तुम्हारे जिंदा होने से। उन्हें डर है तुम्हारे जिंदा होने से। थैंक यू। पांचवी कविता सर, बचपन का घर। पढ़नी है मुझे ना अभी? Yes, continue. ओके, थैंक यू। बचपन का घर। ये गांव हमारे यहाँ खाली हो रहे हैं। पुराने घर खंडहर हो गए हैं सर, कोई रहने वाला नहीं है। सब लोग शहरों की तरफ मूव कर गए हैं। उसी का एक छोटा सा चित्रण है, बचपन का घर। बचपन का घर अब खंडहर हो चुका है। वह घर परिवार के सभी लोगों के दुखों का साथी था और संघर्षों का राजदार भी। खुद भले ढहता रहा, पर एक पिता जैसा हमेशा हमें हौसला देता रहा। एक मां की तरह कठिन दिनों में प्रेम करता रहा। पत्नी की तरह लौटने का इंतजार करता रहा। जब कोई साथ खेलने वाला नहीं होता तो अपनी दीवारें फैलाए साथी की तरह खेलता रहा। उस घर के लोग जी भर ही भर भर कर सारा सामान शहर ले गए अपने साथ, जितना ले जा सकते थे। जो सामान बच गया वह वही घर के साथी हैं। घर उन्हीं परित्यक्त सामानों से हंसी मजाक और बातचीत कर लेता है। घर के लोग कभी अफसोस नहीं करते कि वे बचपन के घर को कभी शहर नहीं ला सके। घर के लोग कभी अफसोस नहीं करते कि वे बचपन के घर को कभी शहर नहीं ला सके। उसकी छत्र छाया में पले हुए सारे लोग इस इंतजार में हैं कि घर कब गिरे, उसके मलबों का बंटवारा हो और उन मलबों से जो पैसे मिले उन्हें जोड़कर बच्चों के लिए शहर में एक घर खरीदा जाए। थैंक यू। तुमसे मिल न पाया। छोटी कविता है। मैं तुमसे मिलने आया था। मुझे नहीं पता था कि हम दोनों के बीच
लंबी बातचीत होगी और मैं बंगलों, प्लाटों, गाड़ियों, तुम्हारी उपलब्धियों, तुमसे जुड़े कई बड़े नामों से मिलकर तुमसे बिना मिले बिना वापिस हो जाऊंगा। हिंदी का दुख। हिंदी का दुख उस पौधे का दुख है जिसकी फसल काटकर धूप में छोड़ दिया गया, नंगा, भूखा, प्यासा। ये दुख सर कई भाषाओं का है, हिंदी का ही नहीं है। इसका दुख कमोबेश उस नदी का है जिसने कई सभ्यताएं पैदा की और बदले में उसे बांझ घोषित कर दिया गया। इसका दुख एक पिता का है जो तरकुल जैसी ऊंची ओहदों वाली अपनी संतानों को टुकुर टुकुर ताकता तो रहा, पर कभी उन्हें प्रेम से छू और सहला न सका। इसका दुख एक स्त्री का है जो कभी मायके और कभी ससुराल के पाले में बारी बारी से फेंकी जाती रही। हिंदी का दुख मकई और गेहूं के पके बालियों का है जो किसानों के खाली पेटों में जाने को छटपटा कर रह गई, पर बलात् गोदामों में ठूंस दी गई। इसका दुख एक गांव प्रेमी बुजुर्ग का है जिसे वहां कम दिमाग का पुरनिया घोषित कर दिया गया, ओल्ड मैन पुरनिया घोषित कर दिया गया। हिंदी का दुख उस रोटी का दुख है जो पिज्जा मिलते ही कूड़ेदान में फेंक दी गई। सुनो, हिंदी का दुख उस आदमी का दुख है जो अभी भी थोड़ा जिंदा है। एक और छोटी सी बिल्कुल कविता है। तुम आदमी में जातियां गिन, तू आदमी में जातियां गिन, मेरी कविता जातियों में आदमी गिनती रहेगी। बिटिया रानी, स्कूल जरूर जाना। बिटिया रानी, तुम स्कूल जरूर जाना। चौखट के अंदर की कई अनलिखी कहानियां हैं, उन्हें लिखना और चौखट की चौकसी की पक्षधरता का जिक्र भी करना। तुम्हें ही सब कुछ करना है क्योंकि तुम्हारी मां को हिंदी नहीं आती। सर मैं टाइम है ना अभी? मेरा ख्याल है कि एक कविता और पढ़ लीजिए बस। अच्छा, ताकि जनता को कह सकूं सत्ता। मैंने बादलों को समुंदर कह दिया तो कुछ कवि नाराज हो गए। मैंने बादलों को समुंदर कह दिया तो कुछ कवि नाराज हो गए। मैंने आदमी को कह दिया ईश्वर तो कुछ आदमी क्रोध में आ गए। मैं नहीं रुका। मैंने पेड़ को स्त्री कह दिया तो कई स्त्रियां गुस्सा हो गई। इस बार मैंने पक्षियों को कह दिया रेलगाड़ी तो सीमा पार के यात्रियों ने मुझ पर मुकदमा कर दिया। मैंने रंगों को कह दिया देश तो राजा ने मुझे पकड़ने को सैनिक भेज दिए। मैंने रंगों को कह दिया देश तो राजा ने मुझे पकड़ने को सैनिक भेज दिए। अंत में मैंने जब महानगर को कविता कह दिया तो मुझे भाषा की दुनिया से बाहर कर दिया। अंत में मैंने जब महानगर को कविता कह दिया तो मुझे भाषा की दुनिया से बाहर कर दिया गया। आजकल मैं एक ऐसी भाषा खोजने की यात्रा में हूं
जिस भाषा में मैं प्रेम को कह सकूं आजादी और जनता को कह सकूं सत्ता। थैंक यू, धन्यवाद। Wonderful, wonderful, Shwetang. Thank you so much. आशीष Shyam, सर, Radwan, Azrudi, and Shwetang have presented to us such sensitive, such powerful, and such moving poems. It has been a fantastic evening and a very, very fitting opening for this platform, Kritya Poetry East and West. On behalf of Kritya team, I would like to thank I will all also poets. want to say a Yes, few words. I'm going to ask. I'm going to ask you to come in right away. To interfere. Right away, I'll ask you to come in. I also before going on to Madam Rati Saxena, I also would like to thank the two translators, Brijesh ji, who translated Shyam's poems into Hindi and presented them so beautifully, and also Emna Azrudi, who translated Radwan Azrudi's poetry into English. Thank you all of you. And now we will have some interactions, but before interactions, I would like to request Madam Rati Saxena ji to address us, to share her responses. Over to you, Madam Rati. Thank you very much, first of all, to Kamla Karanji. Because of you only, I could start again after 5 years. You know that the kind of, this was a poetry therapy for me. So, and you have taken a big initiative. So I'm sorry, I'm thanking my team first. And Brajesh for translating poetry and reading nicely. We had one more poet, Ivan, but he had some problem, and Brajesh has translated his poetry also. So we were working, and we were a little bit worried also, because this is a new kind of app which was really giving trouble to us in starting. Even today also, it is not very comfortable app, but it could fit in our pocket. This session is very good, as Kamla Karanji said that. One thing that we are listening international many languages, English of course, communication, हम लोग English में तो सुन ही रहे हैं, लेकिन जो हमने अरबिक भाषा सुनी या मलयालम भाषा सुनी, ये एक तरह से अलग अनुभव है, क्योंकि इंग्लिश एंड हिंदी इज क्वाइट कॉमन इन अवर कंट्री. हम लोग हिंदी इंग्लिश की कविता सुनते रहते हैं, लेकिन अरबिक भाषा में कविता सुनना ये बाई चांस ही हुआ, नहीं तो हम शायद इसमें पोलिश भाषा में कविता सुनते. और श्याम, आई वांट टू से टेल यू, നിങ്ങളുടെ മലയാളം കവിത എനിക്ക് കൂടുതൽ മനസ്സിലായി ഇംഗ്ലീഷിനെക്കാളും. Means your English, I want to say him that his Malayalam, when he read in Malayalam, I could understand more than he read in English. Because maybe I am more familiar to Malayalam poetry. Another thing, I was so happy to see, Shyam, that you are following the tradition Malayalam reading, which most of the young poets have left. So this is congratulations for that. Keep it up, because we can leave many things, but we cannot learn many things. So it is better to keep this. ये जो what you have read in Malayalam ना, जो इन्होंने मलयालम में जो कविता पढ़ी थी, वो एक तरह से एक स्टाइल है मलयालम कविता पढ़ने का. और ये कविता पढ़ने का स्टाइल इतना आसान नहीं है, इसको सीखना पड़ता है. और आजकल के यंग लोगों ने, कवियों ने उस स्टाइल को पढ़ना बंद कर दिया है, क्योंकि वो सोचते हैं कि नहीं, मॉडर्न तो यही है कि हम गद्य पोएम कविता जैसे पढ़ें. लेकिन आई एम हैप्पी, आई नो श्याम फॉर लॉन्ग टाइम, दैट इज व्हाई आई एम आस्किंग, आई एम कॉलिंग हिम बाय फर्स्ट नेम. He has read his poetry in Malayalam, no? It was fantastic.
English, of course, your poetry is a high level, of course, no doubt. Or Raude, I'm really happy that the poetry you brought from the area where you live and what we listen, and we wanted to bring it here in Kritya platform, because this is for the peace. And then when we talk about the war, then only we can talk about the peace. And श्वेतांक, आपकी तो कविताएं बहुत खूबसूरत हैं और गांव की बिल्कुल उसमें वो आती है, महक आती है। और ये एक बहुत खूबसूरत बात होती है कि आपकी जमीन, आपकी धरती, आपकी भाषा, सब कुछ आपके इसमें दिखाई देती है। स्वाभाविक है कि ये आपके अपनी देन भी, हम ये नहीं कहेंगे कि केवल केदारनाथ जी से संबंध होने के कारण आप लिख रहे हैं, हम ये कहेंगे कि आप अच्छा लिख रहे हैं। ब्रजेश, आपने बहुत अच्छा अनुवाद किया है, शुक्रिया। और कमलाकर जी, तो you had all the burden of this program because you were reading English translation of each one, and most of them you have translated. You were actually helping me to understand and give me the power that I could start after 5 years again this session. So thank you. Do we need a question session or we can stop here? Kamlakar ji? We can take some questions if there are, or yeah, I do not know. Is there any question? आपके पास में कोई सवाल हो इधर उधर तो कर सकते हैं. If you ask. If not problem, can I request to Kamlakar ji for a small poem? Sure, sir. If possible. क्या जी? If possible, please. क्या बोला तुमने? एक छोटी कविता, उनकी छोटी कविता सुनना चाहता हूँ मैं। उसके लिए हम अलग से करेंगे। नहीं, ठीक है। और एक दिन करेंगे वो। नहीं, उसके लिए हम अलग से करेंगे। अभी जो हमारे गेस्ट हैं उन्हीं के लिए है। Okay, आप भी होस्ट हो, कमलाकर भी होस्ट है, मैं भी होस्ट हूँ। आप लोगों को कविता का अनुवाद पढ़ने का मौका मिला, काफी है। बस हम लोग अब फिर से करेंगे। ये हम अभी हमारे गेस्ट है, गेस्ट से कुछ पूछना है तो हम पूछ सकते हैं। Anyone has any questions? Yama, any responses also? Let me see if there are any response in the chat box. I do not know. I cannot. I don't want to disturb because I am very much worried about the this session. Anyway, so I think we just finish it off. Thank you again, and please wait for some time because there are ending screen and then I have to stop from the YouTube, then only you leave your place. Thank you again. Thanks a lot. अभी बहुत अच्छा हमारा आज का कार्यक्रम हुआ और उसके लिए हम आप सबके बहुत आभारी हैं। आप सबके लिए बहुत बहुत बधाई है। And we will meet again. हम फिर से मिलेंगे। शुक्रिया।